So students, my name is Saroj Kumar Raut. I am an English teacher and today we are going to learn the first topic of class 12 English CHSC board, my greatest Olympic prize. The writer of the prose is Mr. Jesse Owens. He was born on 1913 and he died in 1980. Here he expressed his experience in the 1936 Summer Olympics, which was held in Berlin, Germany. So let's begin. I will tell you the summary of the prose, my greatest Olympic prize. तो पिलामाने प्रथमे पढ़िबा आमे CHSC क्लास 12 रो इंग्लिश रो प्रथम टॉपिक माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जार राइटर होउछंती जेसे ओवेन्स से 1913 मसीह जन्म ग्रहण करथिले एवं 1980 मसीह तांकर डेथ हेतिला सेई टॉपिक रे तांकर 1936 मसीह बर्लिन जर्मनी रे जो ओलंपिक्स हेतिला सेई ग्रीष्म दिन रे जो ओलंपिक्स हेतिला तांकर सेठी की एक्सपीरियंस हेतिला से विषय रे एठी वर्णना करछंती एठी मु तुम माननकु समरी कहिबी एई माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो तो प्रथमे आसबा जानिबा द ओलंपिक गेम वाज हेल्ड इन बर्लिन इन 1936 समर सीजन सो व्हेन द ओलंपिक गेम वाज हेल्ड इन 1936 इन बर्लिन जर्मनी 1936 मसीह बर्लिन नामक एक सहर रे जर्मनी रो ग्रीष्म दिन रे ए ओलंपिक गेम्स हेतिला और सेथिरे जेसे ओवेन्स भाग नेथिले तापरे कौन हेतिला हियर जेसे शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ 1936 समर ओलंपिक्स ए टॉपिक रे से 1936 मसीह रे जो समर ओलंपिक्स हेतिला ता विषय रे वर्णना करिछन हियर जेसे ओवेन्स हैज एक्सप्रेस्ड हिज एक्सपीरियंस इन द 1936 समर ओलंपिक्स which was held in Berlin and of Germany country. Then, patriotic feelings running high in German people. से समय रे जर्मनी रे देशभक्ति भावना जागृत हेतिला कारण एक बड़ इवेंट जर्मनी रे अनुष्ठित हेतिला. What happened in Germany? Nationalistic feelings, patriotic feeling was running high. People are very much affected by the event of Olympics. Because as you know, when any kind of big event, a sports event happens in a country, then the people became very patriotic. People think that our people will do well in the Olympics or any kind of sports activity. सेही भली भाबरे सेठी मध्य जर्मनी रो बर्लिन रे मध्य जर्मनी पूरा संपूर्ण जर्मनी देश रे एई देशभक्ति भावना जागृत हेतिला काहे की जागृत हेतिला नेक्स्ट लाइन रे पढिबा Adolf Hitler, the ruler of Germany, childishly insisted that his members were of a master race. सही समय रे जर्मनी रो रूलर थिले आडल्फ हिटलर और से कहिथिले जे तांको देशर लोक माने होउछन्ती एक महान जाति अटंती आ तांको देहरे एक महान रक्त बहुचे एट दैट टाइम इन 1936 आडल्फ हिटलर टोल्ड to the whole world that our people are of a master race and the blood running in our body is also of a master race. Then nationalistic feeling were on all-time high. At that time the nationalistic feelings among the people of Germany was very high. Everywhere the talk was Germany people will win in the Olympic games. कौन हेतिला सही समय रे सारा देश रे चर्चा हेतिला जे जर्मनी रो प्लेयर माने ही ओलंपिक रे भलो भलो मेडल जीतिबे बोली. जेसे ओवेन्स had set the world record of 26 feet 8.14 inches while a university student. जेसे ओवेन्स होउछंती अमेरिका रो जने व्यक्ति से जने निग्रो. Jesse Owens was an American sportsman. He was belonging to the America and he was a Negro.
When he came to know that Mr. Adolf Hitler is telling everyone that our race is a number one race and our race will win in the Olympic Games, at that time he was not worried because he was a Negro. He was not worried. Why? In the next line we will learn. कौन है आडलफ हिटलर जेतेबेले एई कथा कहिथिले जे आम देशर लोक माने हेउछन्ते एक महान जाति आम देशर लोक मानकर रक्त रे जो रक्त बहुची ताहा एक महान रक्त सही समय रे जेसे वेन्स मध्य या सुनिवा को पाइथिले। जेसे वेन्स किए से हेउछन्ते अमेरिकार जने व्यक्ति जने निग्रो जे कि जने स्पोर्ट्समैन से ओलंपिक गेम रे शामिल हवा पे आसीथिले। से एई कथा सुनला परे जमा भी व्यस्त हो नथिले कहीं ना से जेतेबेले यूनिवर्सिटी रे पढ़ुथिले से एक वर्ल्ड रेकर्ड करिथिले लॉन्ग जंप रे केते फुट डेई 26 फीट 8.14 इंचेस से समय रे जंप करिथिले से जोटा कि एक वर्ल्ड रेकर्ड थिला यूनिवर्सिटी पढ़िबा समय रे। Jesse Owens was not worried about all this because he had set an world record of 26 feet 8.1/4 inches while jumping a long jump, which was on world record at that time. Next slide. He was in for a surprise as he saw Louis Long, a tall man of Germany, was jumping 26 feet on his practice slips. जेतेबेले जेसे वेन्स फील्ड ऊपर को जाइथिले से देखिले जे लूज लॉन्ग नामक जने डेंगा व्यक्ति जे कि जर्मनी रो थिले प्रथम जंप रे 26 फीट डेहिथिले आउ एटा से देखिकी आश्चर्य हो जाइथिले से भाबी देइथिले जने कंपिटिटर तांकर एठी अछंती बोली सेतेबेले से अत्यंत आश्चर्य होइथिले। सो व्हेन Jesse Owens came to the field, he saw that a tall man of Germany was jumping 26 feet in the first jump. So he became surprised that he came to know that some kind of competition will be there. I have to be very careful. I have to give my best. Jesse Owens wanted to prove Adolf Hitler wrong and wanted to show who was superior and who was not. जेसे वेन्स कौन करने को चाहूले से प्रमाण करने को चाहूले जदिव से निग्रो थिले से प्रमाण करने को चाहूले जे जर्मनी रो लोक माने जो महान जाति बोली आडलफ हिटलर कहउछंती से ताको भूल बोली प्रमाणित करने को चाहूले कारण से जनइबा को चाहूले सारा विश्व को जे प्रकृत रे किए भल खेली पारे आ किए भल न खेली पारे केवल जाति को लेकिन गर्व करिबाटा भूल बोली से कहूले सेतिपाई से आडलफ हिटलर को भूल बोली प्रमाणित करने को चाहूले। जेसे वेन्स वांटेड टू प्रूव आडलफ हिटलर रॉन्ग because Adolf Hitler was telling that his people will do well in the Olympics. His people are the master race. Their blood is of a high quality. That thing Jesse Owens wanted to prove wrong of Adolf Hitler, and he wanted to prove who was superior and who was not. As he was a Negro, he wanted to prove Mr. Adolf Hitler wrong. So the second unit, आमर प्रथम यूनिट रा समरी मु तुमको कहली वर्तमान सेकेंड यूनिट रा समरी आमे पढ़िबा. So I told you the first unit summary. Now we will learn the second unit summary of my greatest Olympic prize. तो प्रथम आसन जानिबा. An angry athlete who will make mistakes as he was very angry about Hitler's master race theory. जेसे वेन्स जानी थिले जे जदि गोटे खेलाड़ी रागी करी खेलिबो ताहले निश्चित रूपे भूल करिबो. से कहीं रागी थिले कारण से जो आडलफ हिटलर जो मास्टर रेस थियोरी टाकू आडलफ हिटलर समर्थन करुले तांकर सही उपरे राग थिला फले रागटा तांकर माइंड रे रही जाइतिला तेणु से खेल रे केमिति असुविधा पड़िथिले जे आमे जानिबा. सो हियर जेसे ओवेन्स टेलिंग दैट एन एंग्री एथलीट विल ऑलवेज मेक मिस्टेक. So as he was very angry because of the support of Hitler to the master race theory, he was very angry because of that. Jesse Owens was. So what sort of mistake he made? Now we will learn
in the next line. He was unable to jump perfectly in trials because he was jumping beyond the take-up board. ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଫିଲ୍ଡରେ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଠିକ୍ ସେ ଜମ୍ପ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଜମ୍ପ କରିବା କଥା ସେ ଜାଗାରୁ ସେ ଜମ୍ପ ନ କରି ତା'ର ଆଗରୁ ସେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା. So because he was angry, he was unable to jump because he was jumping beyond the take-up board. So he was not getting qualified for the final jump. Next line. Suddenly, Luz Lung came to him and told him to draw a line few inches at the back of the board and take off from there. तापरे कौन हैला जेतेबेले से व्यस्त थिले चिंतित जना पड़ुथिले केमिति क्वालिफाई करिबी मु कोन एते दूररु आसीची एमिति खेलिबा पई सेही समय रे कौन हैला हठात तांको जणे हाथ तांको कांध उपरे लगेइले से किए थिले लूज लंग थिले. लूज लंग जदिओ जण तांकर कंपिटिटर थिले तथापि मध्य से जिनस को से खातिर न करी तांको पाखु आसीथिले आ तांको कहिथिले तमे गोटे काम कर तमे जो लक्ष्य रखुच जे टेकअप बोर्ड रु मु जंप मारिबी बोली तमे टेकअप बोर्ड रो किछि पछुरु निजर लक्ष्य रख सेठू जंप मार ताहले तमे निश्चित रूपे फाइनल को क्वालिफाई करिब. So when he was worried, Jesse Owens was worried and thinking that I came from so long to play like this. He was repenting, he was frustrated by the jump he was making. So at that time what happened? Suddenly from the back the hand of Luz Lung came and he put his hand on the shoulder of Jesse Owens and he told him that you are focusing on the take-up board and try to jump from there. So you do one thing, you eye on the few inches back from the take-up board and jump from there and you will definitely be successful. तापरे कौन हैला Jesse did exactly what Luz Lung told and he qualified for final. तो कौन हैला जेतेबेले लूज लंग तांको कहिले टेकअप बोर्ड रु किछि दूररु तमे फोकस कर आ सेठू जंप मारो ताहले तमे सक्सेसफुल हबो सेतेबेले से सेया कले आ सक्सेसफुल मध्य हेले. So what happened when Luz Lung told him that you jump few inches back from the take-up board and take up from there you will be definitely successful. What Jesse Owens did, he did exactly the same. He jumped few inches back from the take-up board and the result was amazing. He became successful in reaching the final of the long jump. So students, now we will learn the third unit which is the last unit of the approach. एबे आमे पढ़िबा जे एटा होची शेष यूनिट आउ तार समरी आमे एबे जानिबा. प्रथम लाइन. Before final match, Jesse went to Luz Lung room at night in the Olympic Village to thank him. तो कौन हैला जेतेबेले जेसे ओवेन्स लूज लंग को जोगु लंग जंप रो फाइनल रे पहुंची गले से दिन राति रे से ओलंपिक विलेज रे से राति रे लूज लंग को देखा करबा को गले काहेकि गले तांको धन्यवाद जणेबा पे. So when Jesse Owens succeeded in reaching the final because of Luz Lung, so that night before the final match he went to meet Mr. Luz Lung to thank him because of him only he was succeeded in reaching the final. So what happened then? Next con line na padiba. They sat in the quarter and talked so many things. से क्वार्टर रे लूज लंग को क्वार्टर रे से माने बहुत समय बसिले आ बहुत विषय रे डिस्कशन कले. So in the quarter of Luz Lung, Jesse Owens and Luz Lung sat for a longer period of time and discussed so many things. तापर that night they became very good friends. सेई राति रे तांकर सेई कथावार्ता परस्पर भितरे सेई बंधुत्व एमिति हे गला जे से माने से दिन परस्पर गभीर बंधु हे गले. They became very good friend that night by talking so many things. Next line. In the final match, Jesse made an Olympic record
by jumping 8.6 meter. So in the final of the long jump, Jesse jumped 8.6 meter. Jesse गोटे नुआ रेकर्ड कले ओलंपिक रेकर्ड 8.6 मीटर से दिन जंप कले लॉन्ग जंप रे जोटा कि एक ओलंपिक रेकर्ड होता। तापरे लुज लॉन्ग कंग्राचुलेटेड जैसे दो ही वाज हिज कंपिटिटर। लुज लॉन्ग वाज द कंपिटिटर ऑफ जैसे वेन्स बट ही कंग्राचुलेटेड हिम। ही वाज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज ओन ग्लोरी। ही वाज वेरी मच wanted that my friend Jesse should win the long jump. लुज लॉन्ग चाहूले जे जदिओ से तांकर कंपिटिटर थिले तथापि से चाहूले जे मोर सांग जेसे ए लॉन्ग जंपटा जीतु बोली सेतिपाई से तांको अभिनंदन जणाइथिले जदिओ से तांकर कंपिटिटर बा प्रतिद्वंदी थिले। तो जेते बेले जेसे वेन्स वर्ल्ड रेकर्ड कले आउ नंबर 1 आसिले लॉन्ग जंप रे 8.06 मीटर जंप कला परे तापरे कौन है लुज लॉन्ग आसिले आउ जेसे वेन्स को हैंडशेक करथिले। हिटलर वाज ग्लेयरिंग फ्रॉम द स्टैंड बट लुज लॉन्ग डिड नॉट केयर एंड शोक हैंड विथ जेसे। हिटलर स्टैंड रे बसी थिले स्टाडियम रे आउ देखुथिले किंतु लुज लॉन्ग से कथा को खातिर करि नथिले कहीं से जेसे वेन्स को तांकर बंधु बोली भावुथिले तांकर कंपिटिटर बोली भावु नथिले सेतिपई से आसी दृढ़तार सहित जेसे वेन को सहित हैंडशेक करिथिले। When Jesse Owens won the long jump at that time, Luz Long came to Jesse Owens and congratulated him by shaking hand with him. At that time, Hitler was glaring from the stadium, but Luz Long was not worried about that because he was not thinking Jesse Owens as his competitor, but he was thinking him as a good friend. So without caring anybody, he shook hand with Jesse Owens. Tapre Jesse was feeling very happy and he was comparing the friendship as 24 carat gold friendship. Jesse Owens बहुत खुशी हो जाइथिले जतले लुज लॉन्ग तांकर एभली भाव आसी तांको हैंडशेक करथिले से जिनसटा तांको बहुत खुशी देइथिला आनंद देइथिला आउ से तां कहिथिले मु जेते गोल्ड जीति ए कंपिटिशन रे सबुठु बेसी इंपोर्टेंट बा जदि महत्वपूर्ण घटना घटी मो जीवन रे ए ओलंपिक्स रे से होची ए जो बंधुत्व मु पाइछि ए से बंधुत्व को से 24 कैरेट गोल्ड बोली तुलना करथिले। ए फ्रेंडशिप सहित कौनसी सुना को भी तुलना करी हबनी एटा होची प्रकृत रे 24 कैरेट गोल्ड। So at that time Jesse Owens was so happy that when Luz Long came to congratulate him, he was so happy and he told that this friendship is very wonderful friendship and this friendship is more valuable than the gold medal, and he told that this friendship is 24 carat gold friendship. तो स्टार्ट करिबा नेक्स्ट लाइन एठी हमें जानिबा ए समरी रो लास्ट लाइन लास्ट रे कोन हिछि ना Pierre de Coubertin, founder of Olympic Games, told before that important thing in Olympic Games is not winning but taking part. Pierre de Coubertin जे कि प्रतिष्ठाता थिले ओलंपिक गेम्स रो से कहिथिले जे जीतिबाटा इंपोर्टेंट नहे ओलंपिक गेम्स रे बरम पार्टिसिपेट करिबाटा इंपोर्टेंट बोली। सो हियर Pierre de Coubertin, the founder of Olympic Games, told that in Olympic it is not important of winning but to participate. So Jesse realized that Luz was the perfect example of Pierre de Coubertin theory. तेणु जेसे बुझी पारिथिले रियलाइज करिथिले जे पियर डे कुबर्टिन जो कथा कहिथिले जे जीतिबाटा इंपोर्टेंट नुहे पार्टिसिपेट करिबाटा इंपोर्टेंट लुज लॉन्ग तार एक बलिष्ठ प्रमाण थिले एक उदाहरण थिले कारण जदिओ से ओलंपिक गेम्स रे पार्टिसिपेट करिथिले किंतु तांकर प्रतिद्वंदी को से सहाय्य करिथिले सहयोग करिथिले आ उत्साहित करिथिले चित्रु जणा पडुची जे लुज लॉन्ग पियर डे कुबर्टिन का थ्योरी को विश्वास करुथिले। सो जेसे रियलाइज्ड दैट Mr. Luz Long is the perfect example of Pierre de Coubertin theory because though he was the competitor of Jesse Owens, but he did not think like that. He encouraged him, he supported him and told him to do well in the long jump.
So it shows that he was the perfect example of Pierre de Coubertin theory. Pierre de Coubertin told that it is not important to win a game, but to participate in Olympics games is more important. तापरे कौन हेतिला? He understood that essential thing in life is not conquering but fighting well. जेसेवेन्स बुझी पारिथिले जे जीतिबाटा इम्पोर्टाट नुहे, इम्पोर्टाट कौन लड़ीबाटा, गोटे कंपिटिशन रे लड़ीबाटा जेते जदिओ पराजय हो पछे किंतु लड़ीबा फाइट करिबा होची गोटे ओलंपिक गेम्स रे इम्पोर्टेंट. So Jesewens realized that conquering is not important. What is important is fighting well. आउ एई माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज समरी रो तमे जानी पारिथिबो जे से कौन कहिचंती माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज कोटा बोली कहिचंती, तांकर गोल्ड मेडल को कहि नांती, से कहिचंती जे मु जो बंधुत्व करिथिली लुज लंग का सहित सेटा होची मोर सबुठारु बड़ प्राइज ओलंपिक रे. सो जेसेवेन्स is telling here in this prose that winning gold medals was not important for me, but the friendship I made with Luz Lung is very important for me. So students, this is the end of this summary. I will give the MCQ in the link which will help you in the exam. Thank you very much, and we will meet in the next class.